Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, as you know कि हमने उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज के जितने भी पेपर हमें मिले हैं अभी तक फ्रॉम 2011 टू 2020-21 वो पूरे डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। एंड आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ऑल द क्वेश्चंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ द उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स। And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. Next 89, to convert a proposal into a promise, the acceptance must be absolute and unqualified. तो B is the answer. कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 7 में लिखा हुआ है ये ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 90, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडहेशन आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. D is the answer. Next 91, A agree with B to discover treasure by magic. The agreement is void. A is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है ये? This is illustration A to section 56 of Contract Act. Next 92, if the goods are bailed for hire, the bailer is responsible for the damage for faults in the bailed good which he is aware and unaware. चाहे वो अवेयर हो चाहे ना हो उसे फर्क नहीं पड़ता, तो अवेयर या फिर अनअवेयर दोनों हो गए, तो सी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये लिखा हुआ है सेक्शन 150 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। 73, a contract of guarantee may be oral or written. ये दोनों हो सकते हैं. C is the answer. Next 94, if the promisor absolutely repudiates the contract prior to the promised date to the performance, it is anticipatory breach. D is the answer. Next 95, if a person is employed by and acting under the control of original agent in the business of agency, he is known as sub-agent. A is the answer. Section है 191. Next 96, a contract to pay rupees 20,000 if B's house is burnt is a contingent contract. C is the answer. Next 97, to create an agency consideration is not necessary. B is the answer. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 185 में of Contract Act. Next 98, every agreement of which the object of consideration is unlawful is void. A is the answer. सेक्शन कौन सा है ये? 24. Next 71, law of contract is a whole law of agreements, whole law of obligations. It is whole law of obligations arising out of contract. D is the answer. Next 72, announcement of auction sale without reserve is an विदाउट रिजर्व का मतलब कोई प्राइस जो है रिजर्व नहीं किया गया कि मिनिमम प्राइस मान लो इतना रहेगा, तब भी इन्विटेशन टू ऑफर ही रहेगा. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 73, कंसिडरेशन में बी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इन इंडिया, और इंग्लिश लॉ में क्या है? प्रेजेंट और फ्यूचर ही हो सकता है. आंसर क्या रहेगा? ए. और कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. नेक्स्ट 74, ओब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज क्वेज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स. सी इज़ द आंसर. हम यहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं आप. सेक्शन कौन कौन से हैं ये? 68 से 72. नेक्स्ट 75, द राइट ऑफ सब्रोगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अवेलेबल टू दी श्योरिटी. सी इज़ द आंसर. और सेक्शन कौन सा है ये? 140 एंड 141 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट 76, जनरल लियन इज अवेलेबल टू. तो जनरल लियन किसके पास होता है? बैंकर के पास. बैंकर, फैक्टर, वॉर फिंगर, अटॉर्नी या फिर पॉलिसी ब्रोकर, उनके पास होता है जनरल लियन. सेक्शन कौन सा है ये? 171 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बेली का भी होता है सेक्शन 170 में, बट दैट इज़ पर्टिकुलर लियन. पौनी का भी होता है राइट टू रिटेन, बट दैट इज राइट टू रिटेन नॉट लियन. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 77, एज सेड टू शॉपकीपर लेट पी हैव द गुड्स आई विल
you paid. This is a contract of guarantee. A is the answer. बिकॉज वो क्या शॉपकीपर को क्या कह रहा है, भाई तू पी को दे दे सामान, मतलब उसने क्या दिया, उसने क्रेडिट पे दिया, और जो है एस जो है श्योरिटी वो पे करेगा इसका। तो 3 पार्टी एग्रीमेंट हो गया। क्या आंसर रहेगा इसका? ए। और सेक्शन कौन सा लगेगा? 126। इंडेमनिटी कहाँ पर? 124 में। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट 31 में। Next 78. When consent is caused by fraud or misrepresentation, the contract is voidable at the option of aggrieved party. A is the answer. Section 19 provides the same. फ्रॉड के बारे में कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 17 में, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Next 79. The foundation of law for damage for breach of contract is laid down in Headley versus Baxendale. D is the answer. टिन वर्सेस हॉफमैन किस पर है? ये है क्रॉस ऑफर पर। एंड टेलर वर्सेस कार्डवेल किस पर है? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पर। नेक्स्ट 80. एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर सम इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट क्या करेगा? डिस्चार्ज ऑफ द डेट। ए इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है ये? सेक्शन 63 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Next 71. An offer made to public at large is called as general offer. C is the answer. Next 72. Past consideration is no consideration. The settlement is correct. No, it is not correct. Correct under English law या फिर correct both under, ये तो हो गया wrong क्योंकि इंडियन लॉ में नहीं है। Not correct, तो ये correct है इंग्लिश लॉ में, इंडियन लॉ में नहीं है, तो बी इसका आंसर रहेगा। इंडिया में तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है। Next 73. The display of article in a showroom indicating their price amounts to invitation to an offer. C इसका आंसर रहेगा। ग्रेट ब्रिटेन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस बूट्स केस याद है कि नहीं? Next 74. Which one of the following does not render a contract void after it has been made? कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी नहीं कर पाएगा, फिजिकल लीगली प्रैक्टिकली कर पाएंगे, क्या हो जाएगा? वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं कर सकती वॉइड इसको, तो ए इसका आंसर रहेगा। सेक्शन 56 विल बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट 75. हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल इज रिलेटेड टू डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सी इज द आंसर। सेक्शन 73 पर है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट 76. MC चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर केस रिलेटेड टू प्रीव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। बी इज द आंसर। Next 77. Under Indian Contract Act, a contract of indemnity is defined in section 124. D is the answer. 126 में क्या है? Contract of guarantee. Next 78. A saves B from drowning in a river. B promises to pay 10,000 for this kind act. The contract is enforceable as it covered by exception to consideration in section 25 exception 2. So D is the answer. Past consideration is consideration in Indian law. Next 79. The Commissioner of Wealth Tax Mysore versus Vijay Dogar Maharani Sahib Bhavnagar is related to, यह contingent contract पर D इसका आंसर रहेगा। Next 80. A continuing guarantee may be revoked by notice to the creditor short his death. Both. C is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है ये है 130 में, ये है 131 में। Next 71. Where a proposal can be made to be accepted by letter sent through post, the contract is completed the moment the letter accepting proposal is posted. A is the answer. सेक्शन कौन सा सेक्शन है ये? 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। Next 72. A revokes by telegram his proposal to B before his acceptance by B to sell his house at certain price. The revocation is complete against A when the telegram is dispatched. A is the answer. जैसे ही उसने टेलीग्राम भेज दिया उसके लिए तो वो उसी टाइम पर ही रिवोक हो गया। B के लिए कब रिवोक होगा? तो B को मिल जाएगा एक्सेप्टेंस से पहले। रिवोकेशन कहाँ पर है? वो भी सेक्शन 4 और 5 लगेगा इसमें। Next 73. In an unconscionable contract, the burden of proving that contract was not influenced by undue influence lies on the person who is in the position to dominate the will of the other. A is the answer. कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 16 में ही लिखा हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में।
Next 74, a contract is voidable if consent of an agreement is based on mistake as to law. नहीं, इस पे नहीं होगा. One of the parties under mistake तब भी नहीं होगा. Next 75, a businessman enters into a contract with a chartered accountant to pay him a fee and commission for tax saved by so arranging the accounts as to conceal the true income of the business. Any dispute between the businessman and chartered accountant on the fee or commission is to be settled by arbitration. The agreement is void. Why? Because the consideration जो है उसमें वो क्या है, वो void. A is the answer. कैसे? Because they are agreeing to defeat the purpose of law. किसी सब्सटेंटिव लॉ को आप जो डिफीट करना चाह रहे हो, दिस दैट इज अनलॉफुल, तो इसलिए ये वॉइड है. कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. और सिमिलर इलस्ट्रेशन देख सकते हैं आप, इलस्ट्रेशन ई ऑफ दैट सेक्शन. नेक्स्ट 76, अंडर एग्रीमेंट ए सेल्स टू बी हिज स्किन ब्लीचिंग प्रोडक्ट बिजनेस इंटीमेट व्हाइटनर and the goodwill of the business with the condition that A will not carry on such business throughout India so long as B carries on it anywhere in India. The agreement records that this condition is reasonable and that no court will have jurisdiction to examine the condition. The agreement is void but in part. डी इसका आंसर कैसे? देखिए सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि सेल ऑफ गुडविल है तो वहाँ पर जो है रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कर सकते हैं, टू दैट एक्सटेंट वो वैलिड रहता है, और उसके बाहर अगर है कोई अनरीजनेबल तो वॉइड होगा, अदरवाइज नॉट. अब यहाँ पर जो ये नेक्स्ट पार्ट है कि कंडीशन रीजनेबल हो और नो कोर्ट विल हैव जुरिडिक्शन, तो ये ट्राइंग टू डिफीट द पर्पस ऑफ द लॉ, तो ये पार्ट जो हो गया ये है वॉइड. तो एग्रीमेंट इज वॉइड इन पार्ट. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 77, ए एग्रीज टू बी ₹1 lakh इफ एक्स इज नॉट मेड प्राइम मिनिस्टर इवन आफ्टर ही विन्स इन द जनरल इलेक्शन फॉर चूजिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. According to the contract, this is contingent on happening of event. Happening of event कहाँ पर है? सेक्शन 32 में. सो डी इज द आंसर. अगर यहाँ पर टाइम स्पेसिफाई किया होता तो फिर 35 होता. टाइम स्पेसिफाइड नहीं है इसमें. नेक्स्ट 78, वेयर द ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रॉमिस आर टू बी परफॉर्म्ड इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर विच द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स. ए इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 52 में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट 79, ए बेलर इज लायबल फॉर डैमेजेस arising to bailey from the faults in the good if he did not disclose the bailey his awareness of all. क्या? the faults which interfere with the use of the goods, fault which materially interferes, fault which makes them valuable, faults which materially interfere with the use of the goods. C is the answer. सेक्शन 150 में मेंशन किया गया कि फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड एंड विच मटेरियली इंटरफेस विद द यूज ऑफ देम. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 80, एन एजेंट हैज टू पे कॉम्पनसेशन टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज मिसकंडक्ट विच रिजल्ट्स इन लॉसेज दैट आर एन इनडायरेक्ट रिजल्ट ऑफ रिमोटली कोज्ड, इनडायरेक्टली या फिर रिमोटली कोज्ड बाय द मिसकंडक्ट विच आर डायरेक्टली कोज्ड बाय द मिसकंडक्ट. डी इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 212 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. नेक्स्ट 75, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर टाइम फिक्स ऑफ मैरिज. ए गोज मैड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. सी इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया है? ये सेक्शन 56 और इलस्ट्रेशन है बी. नेक्स्ट 76, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर गारंटी इन्वॉल्व्स क्रेडिटर, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर, ऑल ऑफ दीज. डी इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 126 में of contract act. Next 77, A finds B's purse and gives it to him. B promised to give A बढ़ाना चाहिए, ₹50. This is a contract. Yes, B is the answer. Exception 2 to section 25 has done something already. Next 78, a promise for no consideration to give to B ₹1,000. क्या है ये? न्यूडम पैक्टम. क्या बोलते हैं इसको? न्यूडम पैक्टम. दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट. ए इज द आंसर. सेक्शन 25 में इलस्ट्रेशन है ये. नेक्स्ट 79, ए सपोर्ट्स बीज इन्फेंट सन. बी प्रोमिसेस टू पे एक्सपेंसेस इन डूइंग सो. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. यस, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 80, ए फॉर लव एंड एक्स्ट्रा अफेक्शन promises to give his son ₹1,000. A puts his promise to be in writing and registers it. This is a contract. B is the answer. Section 25, exception 1 of Contract Act.
Next 81, A, B, C jointly promised to pay D rupees 3000. D may compel A to pay his 3000. D may compel B to pay 3000 या फिर C. ऑल ऑफ दीज किसी को भी बोल सकता है, उन्होंने जॉइंटली प्रॉमिस किया है ना, तो किसी को भी बोल देगा भाई मेरे पैसे दो, वो आपस में देखें। सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन है ये 43 और ये उसमें इलस्ट्रेशन है A. Next 82, agent not entitled to remuneration for business misconduct comes under which of the following? Section 220, A is the answer. Next 83, anyone of joint promisor may compel to perform under which of the following? अभी तो किया है ऊपर section 43, C is the answer. Next 84, bailment by several joint owner is dealt under which section? That is section 165, D is the answer. Next 71, which of the following amounts to discharge of contract? So performance of contract, frustration, novation, all of the above, D is the answer. Next 72, Hadley vs Baxendale is a leading case on remoteness of damages. Damages पर है ये, B इसका आंसर रहेगा. Next 73, the test of intention to contract is an objective test. A is the answer. Next 74, it does not amount to counter proposal. कौन सा नहीं है? एक्सेप्टेंस विद वेरिएशन, तो वो तो हो जाएगा, काउंटर हो जाएगा. इंक्वायरी इंटू टर्म्स ऑफ द प्रपोजल, इंक्वायरी नहीं होती. पार्शियल एक्सेप्टेंस तो ये है जो है, ये भी काउंटर हो गया, भाई मैं इतना मान रहा हूँ, आगे का नहीं मान रहा. डज नॉट अमाउंट पूछा हुआ है, तो कौन सा? इंक्वायरी इंटू टर्म्स ऑफ प्रपोजल, बी इसका आंसर रहेगा. Next 75, the provision as to consideration do not affect as between donor and donee the validity of any gift which has actually been made. This is expressly provided in explanation 1 to section 25. C is the answer. Next 76, in case of alternative promises where one branch is legal and another is illegal, the legal branch can be enforced. B is the answer. And which section is this? This is section 58. Next 77, the Indian Contract Act contains provision for privity of contract under, देखिए किसी चैप्टर में नहीं लिखे गए हैं. Privity of contract is applicable in India but subject to certain exceptions. लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है किसी चैप्टर में. प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन आप देख सकते हैं 2D में ही लिखा हुआ है, बट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट 78, which of the following section of Indian Contract Act provides for gratuitous bailment? That is section 159, B is the answer. Next 79, which one of the following section is an exception to section 25? सेक्शन 183 होता है 185. तो ऑप्शन में देखते हैं 185, सी इज द आंसर. और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एजेंसी के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली 25 की एक्सेप्शन हो गई, वो सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 80, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिक्वायर्स हाउ मेनी कंडीशंस? अब इसको आंसर करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो क्या लिखा हुआ? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ, तो यहाँ से आगे कंडीशन, दे आर मेड विथ फ्री कंसेंट फर्स्ट, कॉम्पिटेंट पार्टीज 2, फॉर लॉफुल कंसिडरेशन 3, लॉफुल ऑब्जेक्ट 4, नॉट एक्सप्रेसली बार्ड 5. तो कितनी हो गई? 5 कंडीशंस. बी इज द आंसर. Next 71, the rule of Pinel's case related to part performance. A is the answer. Next 72, when an offer is addressed to the public at large, the offer is called as general offer. C is the answer. Carlyle वाला case, Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company. Next 73, X makes a proposal to Y, which Y accepts, but before the acceptance comes to the knowledge of X, Y revokes his acceptance by telegram. When the revocation is complete, when the telegram is received by the X, B is the answer. अब मान लो कि वो टेलीग्राम को पढ़े ही ना, अब वो कंटेंट तो उसकी फिर नॉलेज में आएंगे ही नहीं, तो इसीलिए जब वो रिसीव कर लेगा टेलीग्राम उसकी एक्सेप्टेंस से पहले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्टेंस जो है वो रिवोक हो चुकी है. बी इज द आंसर. एंड सेक्शन 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स द सेम, उसमें इलस्ट्रेशन भी है. वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जब वो रिसीव कर लेगा रिचीज हिम, तो वो रिवोक हो जाएगा. नेक्स्ट 74, ए थ्रेटन टू कमिट सुसाइड हिज वाइफ
and son, if refused to execute a deed in his favor, they executed the deed. Deed is said to have been obtained by coercion. C is the answer. Question provided in section 15. Fraud 70, undue influence 16, misrepresentation 18. Next 75, wagering agreement are void but collateral transactions will be valid. C is the answer. बट वो भी तब वैलिड होंगे जब वो जो कंसिडरेशन है उन कोलेटरल्स में वो लॉफुल है. Next 76, owner of a cinema hall contract to exhibit a film in the month of October. In the month of September, the hall collapsed during an earthquake. The contract has become impossible to perform. C is the answer. Facts are same too. Taylor versus Caldwell, Creel versus Henry, doctrine of frustration. And section कौन सा है? 56, Contract Act. Next 77, if a person accepts a lesser sum of money than what was contracted for a discharge of whole debt, it is known as remission. A is the answer. Next 78, under English law, a contract of insurance other than life insurance is contract of indemnity. D is the answer. Next 79, the leading case Carle versus Carbolic Smoke Oil Company relates to अभी बताया general offer. C is the answer. Next 80, consensus ad idem means consent of the party obtained illegally. No, party identified the same thing in the same sense. इसका मतलब होता है same things in the same sense. B is the answer. Next 71, a person who is not a party to a contract but has some interest in the consideration of that contract can enforce that contract subject to certain exceptions, can enforce that contract, cannot enforce that contract. He cannot enforce that contract. C is the answer, because he is not a party. He is only an interest in consideration. If he has an interest in the subject matter, then he could have enforced that contract. A is the answer. Next 72, forbearance to sue the promisor in return for a promise made by the promisor is a good consideration. Yes, always serve as good consideration. A is the answer. Next 73, the communication of acceptance is complete as against the proposer when it is put in the course of transmission as to be put out of the power of acceptor. A is the answer. Section 4, Contract Act provides for the same. Next 74, threatening to commit certain acts forbidden by IPC is associated with which one of the following? Coercion. Section 15 provides for the same. Misrepresentation 18, fraud 17, mistake 20. Next 75, when one party's consent has been caused as a result of mistake of law, the contract is not voidable. So it means it is valid. B is the answer, and it's provided in section 21 of Contract Act. Next 76, a contingent contract is a contract to do something if some event collateral to such does happen. या फिर to do something if event does happen. To do or not to do something if event collateral to such contract. No, not to do something does or does not happen. Yes, C is the answer. Contingent contract section, it is provided in section 31. Next 77, ABC jointly promised to pay rupees 6,000 to X. X files suit against A to recover the amount. So here X can sue A for the recovery of 2,000, or must sue B, or can recover the amount from any of them. Can recover the amount any of them. C is the answer. And where it is provided? Section 43, and you can see illustration of that section, illustration A. Next 78, A owes B rupees 3,000, C pays to B rupees 2,000, and B accepts it as satisfaction of his claim against A. This payment is a discharge of the entire claim. B is the answer. This is provided in section 63, and you can see illustration C for that. Next 79, for the acts of sub-agent lawfully appointed, the sub-agent is not responsible to the principal. Sub-agent is responsible to the principal directly, or agent is responsible to the principal. Sub-agent is also responsible. Agent is responsible to the principal. C is the answer. And this is provided in section 192 and part 2.
So you can see the agent's responsibility for sub-agent. The agent is responsible to the principal for the acts of the sub-agent. C is the answer. Next, ATB owes to C a debt guaranteed by A. Debt becomes payable. C does not sue B for a year after the debt has become payable. A discharge from shortship is not discharged. Or C cannot recover from B. A is not discharged from shortship. B is the answer, and is provided in section 137 Contract Act. And this is illustration of that section. Next, 71, Indian Contract Act is not exhaustive. The statement is true. A is the answer. Next, 70, the popular case of Askari Mirza versus Jai Kishore related to caution. C is the answer. Next, 73, which of the following right is are not available to the agent? That is right to sell. See, I found this paper very, low quality. The people are not just checking it. So many mistakes, so many questions has been deleted. And here this is also not proper. Now, not available to the agent in what sense? Means agent are trying to get his right to wages or something. So he can just compensate, retain, but he cannot sell. They shall have mentioned it properly. It is a very improper question. Next, 74, a guarantee obtained by means of keeping silence as to material circumstances is invalid. C is the answer. Next, 75, which one of the following is not a remedy for breach of contract? Damages is there, injunction is there, fine is there, specific performance. Fine is not there. C is the answer. Next, 76, ये ओजाई नहीं है, ये क्वेजाई कॉन्ट्रैक्ट्स है, are dealt in section 68 to 72. C is the answer. And sometimes they also ask the chapter. Chapter is chapter 5. Next, 77, promissory estoppel is sometimes spoken of as a substitute for consideration. C is the answer. देखिए ऑप्शन में यहाँ पर here again ओजाई का रखा है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वेजाई कॉन्ट्रैक्ट्स. C is the answer. Next, 78, the leading case of Balfour versus Balfour related to intention to enter into a contract. D is the answer. Next, 79, an agency is terminated by a principal revoking the authority, agent announcing the business of agency, either a principal dying or becoming unsnap mind. All of these, 2 is the answer. Section is 201 of Contract Act. Next, 80, which of the following section of Indian Contract Act deals with Bailey's particular lien? That is section 170. D is the answer. Next, 69, novation of a contract means renewal of original या फिर substitution of a new contract in place of original. B is the answer. Where it is provided in section 62 of Contract Act. Next is 70, X enters into a contract with Y for which Y is guilty of fraud. This is fraud. So many spelling mistakes. X can set aside the contract and recover damages. Set aside contract but cannot recover damages. If recover damages but cannot set aside contract, it is voidable. Any agreement obtained by fraud is voidable at the option of other party, and they can also recover the damages. A is the answer. Next, 71, when a person making a false statement believes the statement to be false, does not intend to mislead to the other party to contract, it is known as misrepresentation. C is the answer. Where it is provided section 18 of Contract Act. Next is 72, which one of the following statement is correct? Generally, quasi-contractual obligations are based on the theory of unjust enrichment. B is the answer. Next, 73, a contract of life insurance, the performance of which depends on the future event, falls under the category of, that is, contingent contract. C is the answer, because it a future event and will happen at that time when it will be happen, a contract will be there. Next, 74, lending money to a borrower at the high rate of interest when the money market is tight render the agreement of loan valid. It will be valid because market is stringent, market is tight. B इसका आंसर रहेगा. B is the answer.
You can see illustration D of section 16 of Contract Act. Next 75, A and B are friends. A told to B to show him a new movie in a posh multiplex, upon which A promised to offer him lunch in a 5-star hotel. B showed him a movie in a multiplex but gave a lunch to B in a roadside dhaba. Decides A's liability. A liable because there was intention to create no. A is not liable because there was no intention to create legal relationship between A and B. B is the answer. A was mistaken, B was mistaken. B इसका आंसर रहेगा. 76, which of the following cases related to damages for breach of contract? That is Hadley versus Baxendale, very famous case. If Baxendale है, Baxendale नहीं है. So many spelling mistakes in this paper. C is the answer. Next 77, if no time is specified in the contract for its promise, the contract is void या फिर voidable या फिर it is not void of uncertainty, it may be performed within a reasonable time. C is the answer. It is provided in section 46 of Contract Act. So friends, here we have discussed all the questions of Contract Act from the year 2011 to 2021 of the Odisha Judicial Services. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कुछ लेसन्स ऑफ एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक. And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.